So last time we talked about inheritance, and we talked about restrictive access related to inheritance, and we also discussed how to access functions in the derived class from an object of the base class, and that is through pointer, defining a pointer of the type base that points to the derived class. And we discussed that in some detail. And then we also talked about virtual functions in the base class. So in case that you want to access the same functions that that are defined or that are declared in the base class as well as in the derived class, both of the same type or same name. Um, so if you want to access one or the other, in that case you have to define the one in the base class as virtual, so that you can access directly the function that is present in the derived class, and that could be done through the pointer. And this is the slide actually shows you a representation of such a case. So if you don't use one of the functions in the base class as virtual, then the inherited function is actually accessed. Otherwise, the derived function will be accessed. So we discussed this last time. The explanation is given on this slide. So I'll request all of you to actually go through this also. So we started our discussion on access specifiers last time. So, and we talked about public inheritance initially. So in case of public inheritance, if you have, so here is an example of, let's say, public inheritance. So you have a base class and a derived class. The derived class is publicly inheriting the objects from the base class. But in the base class, you have got public, private, and protected members. So what will happen? So first of all, what is a public member? You know that a public member is a member that can be accessed by the class itself or by the derived class or by any other function, either present within the base class or outside the base class, in the derived class, or from the main program. So it's publicly available, so you can access this member from anywhere. Then you have private member, and private member can only be accessed by the base members only, and by functions, by functions. And these functions could be friend functions. So we haven't talked about friend functions so far. So we'll talk about friend functions also, maybe after this discussion that we are going to have today. And then, so private members, you already know that they have restricted access. In fact, no access either in the main class, so either in the main program or in the derived class also. And then we have the protected members. So protected member fall in between the public members and the private members. So what happens in case of protected members? The protected members can only be accessed by the base members, the members that are present in the base class. And they can also be accessed by the members or by any function present in the derived class, and by the friend function. So friend functions abhi humne discuss nahi kiye, so we'll discuss that, those friend functions also later on. So protected members have restricted access, and the access falls between private and the public. So एक उसमें addition जो basic addition उसमें आती है, which is on top of the private members, and that is के derived class में भी वो accessible होती है, लेकिन main program से protected members जो हैं वो accessible नहीं होते. So if I have a derived class which derives from or which gets a public inheritance from the base class, then I've got कंस्ट्रक्टर इन द ड्राइव्ड क्लास, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं बेस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करना और चेंज करना चाहता हूँ. तो पब्लिक मेंबर्स को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ इन द ड्राइव्ड क्लास, नो प्रॉब्लम. प्राइवेट मेंबर को मैं एक्सेस नहीं कर सकता ऑफ द बेस मेंबर. तो दिस हैज दिस इज इनएक्सेसिबल, राइट, फ्रॉम द डिराइव्ड क्लास. तो डिराइव्ड क्लास के अंदर अगर मैं बेस क्लास के किसी प्राइवेट मेंबर को चेंज करना चाहूंगा तो आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट.
Protected members, yes, this is allowed. So while residing in the derived class, I can access the protected members of the base class. Fine. So this is within the base. This is within the derived class. Let's move on to the main program. So from the main program, if I declare an object of the type base, and this member, this object can access the private, say the public member of its own class, no problem. Private member इसको आप access directly नहीं कर सकते from the main program. You already know that. Protected members को भी आप access नहीं कर सकते क्योंकि protected members of the base class जो हैं protected members of the base class जो हैं they can only be accessed by the derived class from the base class and by the base class itself. main program से आप उसे access नहीं कर सकते. Okay, so this is actually written in the comments कि ये चीजें accessible होंगी और ये चीजें accessible नहीं होंगी, right? So we'll also had a discussion last time कि अगर derived class का मैं एक object declare करता हूँ तो फिर क्या होगा. अच्छा, अब हम उस साइड पे आते हैं कि अगर derived class का अगर मैं object declare करता हूँ तो फिर मैं access कैसे कर सकता हूँ. Before that, let's just have some further discussion on that कि जो आपके पास जो inheritance है ना, उसका access mode 3 तरह के access modes होते हैं. तो एक तो डेटा मेंबर्स है ना, डेटा मेंबर्स किसी भी क्लास के उस क्लास वो पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी हो सकते हैं. तो दैट इज वन लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन. द सेकंड लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन इज के एक्सेस मोड ऑफ इनहेरिटेंस. कि इनहेरिटेंस जो है वो भी 3 तरह की हो सकती है. आइदर यू कैन हैव पब्लिक इनहेरिटेंस जो कि अभी तक हम डिस्कस करते रहे हैं. सो यू कैन हैव पब्लिक इनहेरिटेंस. You can also have private inheritance, and thirdly you can also have protected inheritance. ठीक है, इन तीनों में फर्क क्या है? This is something that we'll be discussing next. अच्छा, so let's move on to the to public inheritance. और public inheritance के अंदर क्या होगा? तो now this is same example, similar example. इसमें pub we have named it pub just to illustrate कि ये public inheritance की आप बात कर रहे हैं. तो public inheritance है, we are trying to access the members and it's exactly the same जो पहले example में हमने किया. Public member जो है वो accessible है in your derived class, private member not accessible है, protected member accessible है. परफेक्टली फाइन. अच्छा, लेकिन इनहेरिटेंस क्योंकि अब पब्लिक है, सो लेट्स सी के मेन प्रोग्राम में क्या होगा. ठीक है जी. तो बेस क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया. बेस क्लास अपने पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकता है. बेस क्लास अपने प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता इन द मेन प्रोग्राम. बेस क्लास अपने प्रोटेक्टेड मेंबर्स को भी एक्सेस नहीं कर सकता इन द मेन प्रोग्राम, राइट. अब एक ऑब्जेक्ट में डिक्लेयर कर देता हूँ ऑफ द डिराइव्ड क्लास. द डिराइव्ड क्लास इज पब इन दिस पर्टिकुलर केस. तो पब इज द ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन डिफाइंड. ठीक है जी. अब ये पब जो है वो पब्लिक 1 को एक्सेस करना चाह रहा है. बिकॉज द इनहेरिटेंस इज पब्लिक, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि दिस इज पब्लिक इनहेरिटेंस. So public inheritance में nothing actually changes with as far as the accessibility of the members of the derived class are concerned. तो अगर मैं public member of the base class को access करना चाहता हूँ by a derived object, and because it's public inheritance, so it will remain public. So pub जो है pub dot m underscore public is accessible because it remains public in the derived class also. ठीक है. So this would be accessible, no problem. Private member will not be accessible because private member is a sort of what you can say inaccessible, either in the derived class or in the main program by the object of the base class as well as the objects of the derived class. So दोनों cases के अंदर ये accessible नहीं होगा. अच्छा, और protected member भी accessible नहीं होगा. So if you look at the accessibility of the object of the base class and the accessibility of the object of the derived class, तो दोनों में कोई फर्क नहीं. ठीक है. तो बेस क्लास का भी ऑब्जेक्ट जो है वो पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकता है. डिराइव्ड क्लास का भी ऑब्जेक्ट जो है वो पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकता है, बाकी दोनों को वो एक्सेस नहीं कर सकता. So this is under public inheritance. So you have to keep this in mind कि public inheritance
what will happen, the accessibility of variables or data members or function members जो भी आपके पास हैं, those will remain the same for the base object as well as for the derived object. They will not change. ठीक है, nothing will change. Okay, so let's move on. So just to summarize, पब्लिक इनहेरिटेंस के अंदर एक्सेस स्पेसिफायर इन द बेस क्लास जो है हमारे पास, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा मेंबर्स, उसमें जो पब्लिक है इनहेरिटेड क्लास के अंदर भी वो पब्लिक रहेगा, ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर हो या फंक्शन, दोनों में पब्लिक रहेगा। अगर वो प्राइवेट है बेस क्लास में तो डिराइव्ड क्लास में वो इनएक्सेसिबल हो जाएगा, और अगर वो प्रोटेक्टेड है बेस क्लास के अंदर तो डिराइव्ड क्लास के अंदर भी वो प्रोटेक्टेड की तरह ही बिहेव करेगा, राइट। प्रोटेक्टेड की डेफिनेशन हम पहले बता चुके हैं कि मेन क्लास से वो एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, इस डिराइव्ड क्लास से अगर कोई और क्लास डिराइव होती है तो वो प्रोटेक्टेड तो उस सूरत में वो उसे एक्सेस कर सकेगा, अदरवाइज वो एक्सेस नहीं करेगा, प्रोवाइडेड कि इनहेरिटेंस आपके पास जो है वो पब्लिक इनहेरिटेंस हो। Okay, so this has to be very clear in your mind कि public inheritance के अंदर public data member in the base class remains public in the derived class, private member of the class base class remains inaccessible in your inherited class, or protected member remains protected, so nothing actually changes. Okay, now let's move on to the second case. Second case is when you are inheriting privately. Okay, so let's start with the base class. तो base class में मैंने ये 3 members define कर दी। अब I'm inheriting privately, so instead of having public inheritance, now we have private inheritance. ठीक है, so private inheritance में क्या होगा? Private inheritance के अंदर this is what this means. Public inherited members become private. So जो भी member आप इनहेरिट कर रहे हैं फ्रॉम द बेस क्लास, अगर वो पब्लिक है तो डिराइव्ड क्लास के अंदर इट विल बिहेव एज अ प्राइवेट मेंबर, तो पब्लिक चेंजेस टू प्राइवेट इन योर डिराइव्ड क्लास। सेकेंडली, जो प्रोटेक्टेड मेंबर है दे आल्सो बिकम प्राइवेट, राइट। एंड थर्डली, प्राइवेट मेंबर रिमेन इनएक्सेसिबल, तो प्राइवेट जो पहले प्राइवेट था वो बाद में भी प्राइवेट है, इट वुड रिमेन इनएक्सेसिबल, तो डिराइव्ड क्लास से आप प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकेंगे और मेन प्रोग्राम से भी एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो हो क्या रहा है, अगर आप प्राइवेट इनहेरिटेंस करते हैं तो पब्लिक मेंबर्स एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स चेंज टू प्राइवेट, सो एवरीथिंग बिकम्स प्राइवेट, राइट। सो लेट्स जस्ट डिफाइन दिस कंस्ट्रक्टर। तो इसमें m अंडरस्कोर पब्लिक को जो है वो मैं 1 करता हूँ, तो so what should happen, so this m underscore public जो है this would behave as a private member in the derived class, ठीक है जी in the derived class, so from the derived class it's just perfectly fine। लेकिन अब अगर मैं PIR यानी प्राइवेट क्लास से एक्सेस करना चाहता हूँ from outside, तो this member will not be accessible. I'll just show you an example, ठीक है। प्राइवेट मेंबर रिमेन्स इनएक्सेसिबल, तो प्राइवेट ऑफ द बेस क्लास इज इनएक्सेसिबल। प्रोटेक्टेड जो है, प्रोटेक्टेड मेंबर which was a protected member in the base class now will act as a private member of the derived class. This is under private inheritance, ठीक है। So what will happen, so what should happen in the, so let's move on to the main program. So main program के अंदर I declare an object of the base class. So let's say I declare an object of the base class and I can access these members, no issue। public को मैं access कर सकता हूँ because it's public, private को नहीं कर सकता और protected को नहीं कर सकता, so this is the object of the base class here। अच्छा जी, so what happens, अब अगर मैं डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देता हूँ, तो डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट मैंने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे PRI प्री,
right? अब m underscore public will not be accessible because m underscore public is acting as a private member of pre. It's no more public क्योंकि आपने जो inherit किया है ना वो through private inheritance किया है. तो m underscore public will not be accessible by the object of the derived class. ठीक है, so you can see the difference. Base class तो access कर सकती है लेकिन derived class उसे access नहीं कर सकती. तो all these three members will not be accessible. ठीक है, in order to access this आपको प्री क्लास के अंदर कोई फंक्शंस लिखने पड़ेंगे. तो फंक्शंस के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. Because public members and protected members of the base class, when inherited in your derived class, act as private members. Okay, right. So let's summarize this. So in summary, एक्सेस स्पेसिफाइज इन द बेस क्लास जो है दिस इज अंडर प्राइवेट इनहेरिटेंस. जो पब्लिक है वो प्राइवेट हो जाएंगे, जो प्राइवेट है वो पहले ही इनएक्सेसिबल है वो इनएक्सेसिबल ही रहेंगे, जो प्रोटेक्टेड हैं इन द बेस क्लास वो प्राइवेट हो जाएंगे इन योर इनहेरिटेड क्लास. जी जी जी, एवरीथिंग. सो आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ द डेटा मेंबर्स ओनली, लेकिन दिस डजंट मीन कि फंक्शंस के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता. फंक्शंस के ऊपर भी एग्जैक्टली इसी तरह ही अप्लाई होगा. एनी मेंबर, ठीक है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट मेंबर्स हियर, डेटा मेंबर हो या फंक्शन, ठीक. सो इट वुड अप्लाई टू एनी. सो अगर आप प्राइवेट इनहेरिटेंस करते हैं तो अगर कोई फंक्शन जो है वो पब्लिक है इन योर बेस क्लास, वो डिराइव्ड क्लास के अंदर अगर प्राइवेट इनहेरिटेंस है तो डिराइव्ड क्लास के अंदर भी वो फंक्शन जो है दैट फंक्शन विल बिकम प्राइवेट टू दैट डिराइव्ड क्लास. ठीक है. सो जो प्राइवेट मेंबर्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं वही रिस्ट्रिक्शंस इनहेरिटेड मेंबर्स के ऊपर लगेंगी. जी मिनाहिल, दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन. ओके, प्रोटेक्टेड में क्या होगा? प्रोटेक्टेड में एवरीथिंग बिकम्स प्रोटेक्टेड एक्सेप्ट द प्राइवेट मेंबर्स. तो प्राइवेट मेंबर्स पहले इनएक्सेसिबल थे, अब भी इनएक्सेसिबल रहेंगे. जो बेस क्लास में पब्लिक मेंबर्स थे वो अब प्रोटेक्टेड हो जाएंगे और जो पहले प्रोटेक्टेड थे अब भी प्रोटेक्टेड रहेंगे. ठीक है. So this is the difference between inheritance. So inheritance के अंदर one thing you have to keep in mind कि जिस तरह की आप inheritance कर रहे हैं उसी तरह की properties data members और functions के साथ हो जाए. Right? अगर आप protected inheritance कर रहे हैं तो public and protected, public will become protected. The rest will remain as it is. अगर आप private inheritance कर रहे हैं तो public and protected will become private. Private will remain private obviously. Will remain inaccessible. और अगर आप public कर रहे हैं inheritance तो everything that is in the base class will translate in exactly the same form in the derived class. No change at all. Right? Right. So I hope this is clear. If there is any question on this, access modifier which lets us inherit private members. I mean you can only change inherit private members. अगर फर्ज करें बेस क्लास के अंदर आप सेटर गेटर लिख के उनको एक्सेस कर सकते हैं. ड्राइव्ड क्लास के अंदर इट वुड स्टिल रिमेन इनएक्सेसिबल, वो नहीं होंगे. हाँ, प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास जो हैं उनको आप थ्रू फंक्शंस उन डिराइव्ड क्लास के अंदर उनका सेटर गेटर आप अलग से लिख सकते हैं. So that can be written. ठीक है. So you have to write down the setters and the getters quite easily. ठीक है. So inaccessibility आपकी private members की inaccessibility रहेगी. Whether that is in the base class or that is in the derived class. Right. So any other question before we move on? Okay. In this case, let's move on and let's just take another example here. So here is another example. So you have the base class here, or these are the members that are shown here. So these are the members of the base class, and then you have private inheritance in this case.
ठीक है. So D2 has private inheritance from base, and these are the members of your derived class. Remember, they are different from the base class. So base class के अंदर और members हैं, और derived class के अंदर जो हैं वो और members हैं. So m underscore public, m underscore private, m underscore protected, these are the members of the base class. M underscore public 2, m underscore private 2, m underscore protected 2 are the members of the derived class. ठीक है जी. And base D2 inherits privately from base, right? So what will happen in this case? D2, which is the derived class, can access its own member without restriction. वो अपने members को कर सकते हैं, private members को through function अपने वो कर सकते हैं. वो public है. Any object of type D2 is able to access underscore m underscore public 2 without any problem. लेकिन m underscore public accessible नहीं रहेगा, because ये inheritance जो है वो private inheritance है. तो m underscore public will become private, m underscore protected will become private, right? So this will become private. Okay. Right. So here is another example. जिसमें we have got a base class, we have got class D2 and we have got class D3. G, in your derived class you are not able to access them. ठीक है. In your derived class, inaccessible का मतलब ये है कि within the same class आप उन्हें access कर सकते हैं, not even from the derived class. Okay. Setters and getters of the same class उसे access कर सकते हैं, but not by the setters and getters defined in the derived class, right? So this has to be clear, right? Okay, so यहाँ पे क्या हो रहा है जी? सर जब मैं कॉल करता हूँ उसकी वजह क्लास का सेटर एंड गेटर दूसरी क्लास के अंदर, तो वो भी नहीं चलेगा ना? आई मीन लाइक नहीं, वो सेटर और गेटर तो पब्लिक है ना, तो वो तो आप कर सकते हैं. तो वो उसके सेटर और गेटर को, ओरिजिनल सेटर और गेटर को जब वो कॉल करता है उसके अंदर आप अपने प्राइवेट मेंबर को चेंज कर रहे हैं, तो दैट इज फाइन. ठीक है ना? यानी बेस का सेटर गेटर है और वो सेटर गेटर जो है वो पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है. जी सर. तो आपने डिराइव्ड क्लास के अंदर लेट्स से प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस अगर आपने की है, तो उस सूरत में उसका सेटर एंड गेटर जो है वो दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, अपने बेस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. बेस फंक्शन के अंदर जो है वो अगर अपने किसी प्राइवेट मेंबर को कॉल कर रहा है तो दैट इज परफेक्टली फाइन. मेक सेंस. थैंक यू सो मच. ओके ओके. राइट जी. सो इस सिनेरियो में क्या होगा? लेट्स से कि क्लास D3 है विच इनहेरिट्स पब्लिकली फ्रॉम D2, D2 इनहेरिट्स प्राइवेटली फ्रॉम बेस, और बेस आपके पास ऑलरेडी मौजूद है. तो लेट्स से कि मैं एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूं इन क्लास D3. सो पब्लिक इनहेरिटेंस है फ्रॉम D2. तो व्हाट वुड दिस मीन? दिस वुड मीन सो दिस वुड मीन कि ये तो मेंबर्स ठीक है, उनकी एक्सेसिबिलिटी जो है उसके मुताबिक D3 उनको एक्सेस करेगा, और ये मेंबर्स दे आर बीन इनहेरिटेड थ्रू पब्लिक इनहेरिटेंस. तो इन D3 पब्लिक 2, प्राइवेट 2, प्रोटेक्टेड 2, इनकी एक्सेसिबिलिटी वही रहेगी जो D2 के अंदर है. ठीक है. अच्छा, एज फार एज दीज मेंबर्स आर कंसर्न, तो दीज मेंबर्स वर इनहेरिटेड प्राइवेटली. ठीक है. तो ये सारे के सारे जो हैं they will be part of this function, but now they will be acting as private members. तो private members के तौर पे D2 में ये act करेंगे, and that would mean कि public inheritance D3 की है, so therefore they all remain private to
D3 also. So they'll remain private. ठीक है. So that means कि अगर आप D3 का कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, वो अपने मेंबर्स को एक्सेस कर लेगा, नो प्रॉब्लम. वो D2 को भी एक्सेस कर लेगा, मेंबर्स को, नो प्रॉब्लम. लेकिन बेस क्लास के मेंबर्स को वो एक्सेस नहीं कर पाएगा किसी भी सूरत. और इसी तरह of course if you have some sort of recursive like some sort of calls to the functions, और D3 में एक फंक्शन है, वो D2 के एक पब्लिक फंक्शन को कॉल करता है, और उसके अंदर आप एक फंक्शन कॉल करते हैं जो कि बेस फंक्शन है विच इज आल्सो पब्लिक, और उसके अंदर आप प्राइवेट मेंबर्स को या इन मेंबर्स को अगर आप चेंज करते हैं तो दैट वुड वर्क. आई मीन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. या अगर आप D2 के अंदर आप कोई फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, इवन देन देयर इज नो प्रॉब्लम. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि क्या चीज़ इनहेरिट हो रही है, क्या चीज़ इनहेरिट नहीं हो रही, किस तरीके से वो एक्सेस इसमें डिफाइन हो रही है. जी 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 इब्राहिम, यू आर परफेक्टली राइट. प्राइवेट मेंबर इनएक्सेसिबल है, वो m अंडरस्कोर पब्लिक को एक्सेस कर सकते हैं और m अंडरस्कोर प्रोटेक्टेड 2 को एक्सेस कर सकते हैं. लेकिन लेट्स से कि D2 के अंदर एक फंक्शन है जो कि प्राइवेट 2 को मॉडिफाई करता है या चेंज करता है, उसका भी सेटर गेटर है, ठीक है, और वो पब्लिक है. तो वो क्योंकि पब्लिक इनहेरिटेंस है तो वो फंक्शन इधर भी पब्लिक ही रहेगा, तो यू कैन एक्चुअली कॉल दोस फंक्शंस विदाउट एनी प्रॉब्लम. ठीक है, तो उसके थ्रू आप प्राइवेट मेंबर्स को जो है वो कर सकेंगे, उसमें इशू कोई नहीं है. इसका अपना एक फंक्शन आप लिख सकते हैं, उसके अंदर आप इसके सेटर गेटर को कॉल कर सकते हैं और फिर इसके प्राइवेट मेंबर्स को चेंज कर सकते हैं. और इसके अंदर एक फंक्शन होगा जो कि इसके पब्लिक फंक्शन को कॉल करेगा और वो पब्लिक फंक्शन इन मेंबर्स को चेंज कर सकता है. तो even then that would be fine. So there won't be any issue. Right? जी शर्जील, जी आपने जो लिखा है दिस इज व्हाट इट इज. ठीक है, D2 पे वो प्राइवेट होंगे, ठीक है जी, दे इलेक्ट एज प्राइवेट. जो प्राइवेट मेंबर्स हैं बेस के, दैट विल बी इनएक्सेसिबल. पब्लिक और प्रोटेक्टेड विल आल्सो बिकम प्राइवेट, विल बिकम प्राइवेट. तो जब वो D2 में प्राइवेट हैं तो दे विल बिकम इन एक्सेसिबल इन D3. ठीक है, so this is how this would happen. Okay, right, so there is some explanation of this that is given here. So this actually completes this set of slides. I'll move on to the next set of slides in a while. Just wait. Right, G. So I'll just share the screen again. Oh, a minute. Right, yeah. Right, so let's just discuss some. So इसमें type where this should be 6. Anyway, so let's just talk about some other types of inheritance. And inheritance is such a deep topic that we can I mean, the rest of the course could only be on inheritance, and we can just continue on this. But of course, we'll limit ourselves on this, um, and try to see कि कहाँ तक हम जाते हैं. And there are other topics that we need to cover. Okay, so multi-level inheritance. So you have this multi-level sort of inheritance that the diagram actually represents. So you have a base class, and then that base class actually has a derived class, and then the derived class has further derived class. So you have base class 1, base class 2, and then the derived class. So class A inherits from B and B inherits from C. So this type of an architecture, this type of inheritance would be what you call as multi-level inheritance. ठीक है, so all those principles जो हमने यानी जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया बेस से D2 और D2 से D3, that is an example of multi-level inheritance. Okay, here is an example of that, and this is how the constructors of these will be called. You can see here you have the base class which is vehicle. Okay. Then you have four-wheeler.
which inherits from publicly from vehicle, and then you have car that inherits publicly from four-wheeler. So this is a sort of hierarchy. If you run, let's say, the run this code, uh, you will see कि इनके constructors जो है ना वो कैसे जो हैं वो कॉल होंगे. Obviously अगर आपने कार का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया, कार का ऑब्जेक्ट, so this is a type of inheritance that is happening in this particular case. So कार का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है, so you have a constructor for the car, you have the constructor for the four wheeler, you have the constructor of the vehicle itself, and you can very easily see कि अब इसमें constructors जो हैं वो कैसे कॉल होंगे. ठीक है जी. सो फर्स्टली व्हीकल का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर पब्लिक व्हीकल का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और फिर एट द एंड कार का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. ठीक है जी. सो दिस इज हाउ दिस विल बी executed. So this is a vehicle, this is a constructor that will be called first. Objects with four wheels are vehicles, so this is the second constructor that is called. And then or the intermediate base class, और फिर आपके पास जो derived class है, final derived class, उसका constructor call हो रहा है. ठीक है. So multi-level inheritance के अंदर the sequence in which the inheritance is done in the same sequence will apply, and multi-level inheritance would work. Then we have the hierarchical inheritance. Hierarchical inheritance is shown here in this slide. So you have a class G. Class G से inherit कर रही है class B, or you have class E that is inheriting, and then class B say inheritance is to A and to C, और E से D और F तक जा रही. ठीक है. So you have more than one subclasses in the inheritance, and from a single base class. So you have a single base class here, which is right at the top, and then there are two classes that inherit, and then from that intermediate class you have further inheritance that comes up. तो class A जो है वहाँ पे अगर आप देखें तो class A is actually having a multi-level inheritance in it. Class C is also having multi-level. Class D or F is also multi-level. So it's a sort of a tree, sort of a structure that you have in this particular case of inheritance. Right. So class A will have instances of class B, class C will have instances of class B, and similarly D would have instances of E, and F would have instances of F, E. Similarly, B would have instances of G, and class E would also have instances of G. I mean, all the data members as well as the functions. यहाँ पे you have to be careful क्योंकि it could be a mix of inheritance. Class B जो है वो G से हो सकता है privately inherit कर रही हो, और A जो है वो B से publicly inherit कर रही हो, C जो है B से protected inheritance हो रही हो. So you can see the level of complexity that might arise because of this type of inheritance. ठीक है जी. But as long as the basic principles of inheritance are clear in your mind, I don't think there would be any problem of any sort. So you should be a bit careful in analyzing this sort of an analysis. Okay. Right. So here is a simple example. You have a class vehicle here, and then you have so this is a class vehicle. ठीक है. Class car actually inherits from publicly from vehicle, and class bus inherits publicly from vehicle. So we have a structure of this form. So we have the common base class, and then these are the two classes that get inheritance from these two particular cases. So here you have the car, here you have the bus, and here you have the vehicle itself. And now let's see कि आपका main program के अंदर क्या हो. कार ऑब्जेक्ट 1 है और बस ऑब्जेक्ट 2 आपने डिफाइन किया है. So these two objects have been declared in your main program. Obviously
the base class the base class constructor will be executed first, and then the object class जिस class से वो object belong करता है उसका constructor call होगा. So in both cases this would happen. So at two separate instances the constructor for vehicle will be called. First will be called for the base class car, the derived class car, and the second will be for the derived class bus. Okay, it's not that difficult. Then we have hybrid inheritance. Hybrid inheritance is actually a mix of hierarchical inheritance and multiple inheritance. ठीक है. So if you remember from our discussion earlier, हमने multiple inheritance की भी बात की हुई है. ठीक है. So multiple inheritance is an example where you have, let's say, two base classes. ठीक है. So आपके पास एक derived class, ठीक है, and then you have two base classes. So this is what a multiple inheritance would be. ठीक है. multi level inheritance वो इस तरह से है, right? और hierarchical जो है that is a sort of a tree sort of a structure जिसमें common base class आपके पास आती है, तो ये hierarchical. So you can have a mix of all these also, and here is an example of a mix of all these जहाँ पे hierarchical as well as multiple inheritance and multi-level inheritance all are mixed together. So this is something that would probably be the most complex form of the structure that you might have in case of inheritance, right? Okay. So here is an example, a simple example. So we have this car example of the vehicle again. So you have the base class vehicle, then you have another base class which is fare, and then you have let's say the first subclass as car, the second subclass as bus. Okay, the first base class the first subclass is car that inherits from vehicle only, and the second subclass is bus that inherits from vehicle as well as fare. Okay, and everything is public. I mean, just to keep things simple, everything is public. The inheritance is public. Okay, so what will happen if I declare an object of the type bus, object 2, the type bus? Okay. Uh, okay, so I'll just request you to wait for a minute. I'll be back in a minute. Okay, I'll be back in a minute. Okay, let's start again. Okay, so in this particular scenario, I mean, you can easily find out कि किस तरह से constructor call होंगे, vehicle का constructor call होगा, फिर fare का constructor call होगा, और फिर bus का अगर अपना constructor है तो वो constructor call होगा. और fare जो है, that is also base class and vehicle is also base class. तो बस का ऑब्जेक्ट अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से वो चीज़ें जो हैं वो कॉल होंगी. ठीक है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. सिमिलरली आप कार के लिए भी निकाल सकते हैं कि किस तरीके से वो होगा. सो यू हैव टू स्प्लिट इट अप इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंसेस एंड फाइंड आउट कि किस तरह से कंस्ट्रक्टर कॉल्स होंगी और किस तरह से आप द थिंग्स वुड बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड अगर आप इनमें से प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक इनहेरिटेंस को मिक्स करेंगे. ठीक है. So even in this particular scenario जिसमें bus inherits from two different classes, so हो सकता है एक से वो privately inherit कर रही हो, दूसरे से वो publicly inherit कर रही हो. So that's possible. Okay, let's take another example here.
So let's say कि ये एक आपके पास एक simple program है which gives you an example of a particular type of inheritance. क्या है? Animal class है, then you have the class cat. So it inherits publicly from animal. And then you have class domestic, which is independent in this case, so it's also a base class. And then you have a class Rocky, right? That is inheriting from cat as well as from public, from domestic publicly. In the main program, what's happening in the main program? So in the main program, you're declaring an object of the type Rocky, and then which is, let's say, my cat is the object. So if this is the case, then what should happen? I mean, what should be the outcome in this particular case? Anyone? Oh, sorry, I just stopped sharing. I'll just share it again. Okay. Yeah. Okay, so let me just go to this IDE and let's just run this and then see कि क्या इसमें क्या होता है. ठीक है जी. Okay, so let's just go to the environment where we have where I've actually just coded it. This very simple example. Okay, so this is the coded part here. So you have the animal class, then you have the cat, then you have the domestic, and then you have the Rocky, and then you have the main program here, right? Gee, so yeah, so animal constructor, then cat constructor, then domestic constructor, then domestic constructor. Okay, right? So this is an animal which is cat and is domestic. बिल्कुल ठीक है. शयान ने जो लिखा है, it's perfectly fine. Let's just execute this, and this is what you'll get in this particular case. But you forgot, Shayan, to run the constructor for the final class, which is Rocky. Okay? So name of the cat is Rocky. Okay? So this is what will be written. Okay? Now, इससे you can actually also find out कि इसको हम इस तरह से, I mean, the advantage इसका क्या होगा? Let's say कि हम inheritance की बात कर रहे हैं और इस तरह की चीजें देख रहे हैं. So, क्या हो सकता है? I mean, what you have done is कि आपने let's say कि एक text की आप कोई text generate करना चाहते हैं, तो you can actually divide that text into various sentences, और हर sentence को आप अलग से you can get a value from the user or somewhere else. और उससे आप sentences construct कर सकते हैं, and then you can display those sentences based upon the input that you are getting from the users. ठीक है, rather than कि आप पूरा पैराग्राफ लें और उसको आप उसकी टेक्स्ट प्रोसेसिंग करें, you can actually divide it into different forms, और ताकि आप उसकी reusability को भी देख सकें. अच्छा, just to clarify that why this inheritance and how this inheritance concept is useful, let's take an example of mobiles. So we have lots of mobiles around, and they are of different companies, and those companies have different models, and every model has some features, right? Yeah, Smara ne pucha, Rocky is not the base class. Smara, Rocky is the derived class. It derives publicly from cat and domestic. ठीक है, जो बेस क्लास है, जो पेरेंट बेस क्लास है, वो एनिमल सबसे टॉप पे एनिमल है. ठीक है, एनिमल से कैट इनहेरिट कर रहा है, और डोमेस्टिक भी एक बेस क्लास है जो कि इंडिपेंडेंट है.
जी जी जी, इट्स एक्चुअली अ चाइल्ड क्लास, अब आप ठीक कह रही हैं। अच्छा, so let's just the example which I've just given you before addressing this question. So how would you put it in hierarchy? Let's say कि अगर मैं उसको देखें, mobile has some general features, और फिर then every company has some specific features, and then every company has multiple mobile models, and every mobile model has some specific features. ठीक है, तो जो जर्नल मोबाइल फीचर्स हैं, दे विल गो इनटू द मोबाइल क्लास. जो कंपनी के फीचर्स हैं, लेट्स से उस कंपनी में एम्प्लॉयज कितने हैं, उस कंपनी की एवरेज सैलरी कितनी है, उस कंपनी की लोकेशन किधर है, वो कंपनी क्या क्या कितने मोबाइल्स बनाती है. These are some of the questions, or these are some of the data points related to that company. They'll go into the say company class, and then every model would have its own class. Let's say एक सैमसंग कंपनी है, और लेट्स से सैमसंग का अपना एक मॉडल है, एंड देन आईफोन का अपने मॉडल्स हैं, और उसमें and similarly there are other models, and so there are some specific features of every model. So those specific features of every model would go into their respective classes. So you have a sort of, say, a sort of a structure here which you can very easily visualize, and then you can compartmentalize. So let's say कि आइंदा वो कंपनी एक नया मॉडल लॉन्च करती है, तो यू नो वेयर टू ऐड द फीचर्स ऑफ दैट मॉडल. ठीक है, यू सिंपली हैव टू रीडिफाइन अ न्यू क्लास. आई मीन एक नई क्लास आप उसमें डिफाइन कर देंगे, उसके फीचर्स आप उसमें डाल देंगे. ठीक है, और एंड देन यू हैव एक्चुअली एम्बेडेड एवरीथिंग टुगेदर. तो आपको कंपनी को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है दूसरे, एवरीथिंग इज रीयूजेबल. सो नेक्स्ट टाइम व्हाट हैपेंस इज कि आप वो कंपनी जो है, it actually starts a new business. So company profile अगर आपने एक जगह पे रखी हुई है, तो just have to redefine a new sort of a class for a new business. Same hierarchy को आप use कर सकते हैं for any other type of business. Let's say mobile business से निकल के वो laptop business की तरफ वो आती हैं. So in that case, you can exactly take the same hierarchy that has been developed, or same structure that has been developed for the software, and then use it for another. ठीक है, तो आप इसमें आपको रीयूजेबिलिटी का एस्पेक्ट भी जो है काफी वाज़ेह तौर पे नजर आता है. ठीक है जी. सो I'll just show you a very simple example of that, again taken from mobile companies and different types of inheritances that one can expect. So let's say आपके पास मोबाइल कंपनी है, and there is one company which is called Samsung. तो ये आपके पास सिंगल इनहेरिटेंस की एक एग्जांपल है. मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में सैमसंग के किसी स्पेसिफिक मॉडल की आप बात कर रहे हैं, दो दिस मॉडल कुड बी क्वाइट ओल्ड, लेकिन जस्ट एज एन एग्जांपल. सो दिस आर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. सो सैमसंग S5 के अंदर अगर मल्टीपल वेरिएंट्स अगर आपके पास आते हैं, तो आप इसके नीचे भी इसके नीचे भी जा सकते हैं, और इसके नीचे आप व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन हैव मल्टीपल क्या होगा, hierarchical sort of inheritance underneath Samsung S5. और सैमसंग के नीचे भी आप मल्टी लाइक हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं. सो यू कैन हैव अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस फॉर्म जिसमें एक से ज्यादा कंपनीज इन्वॉल्व हो सकती हैं. देन यू कैन हैव अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ दिस फॉर्म जिसमें नोकिया का अपना मॉडल है, सैमसंग का अपना मॉडल है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. दिस कुड बी एन एग्जांपल. And then finally you can have multiple inheritance of this form. ठीक है, iMobile and iTelephone is an example that would inherit its that would well, Samsung would inherit something from iMobile and iTelephone. So these are the two brands that could feed into Samsung. ठीक है, so these could be like suppliers of Samsung or something of that sort. ठीक है, so this is how you can actually split your program into multiple, say, ways, and then make it a program that you can actually efficiently control. और एक और इसका एक बड़ा मेजर एडवांटेज है इस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करने का, और वो क्या हो सकता है. आई मीन, consider that you are operating a software house. ठीक है, लेट्स से कि आप एक सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो चला रहे हैं. तो इस तरह से स्ट्रक्चर करने का फायदा क्या होगा. एक 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 और भी बहुत बड़ा फायदा है जो कि मैंने मेंशन नहीं किया अभी.
लेकिन I'll just invite you to actually say something about that. So let's say, क्या कहते हैं आप, और क्या फ़ायदा हो सकता है other than that? डेटा ऑर्गेनाइजेशन आपके पास आ गई, एक वेल सेट स्ट्रक्चर आपके पास आ गया है. Anything else which you can get? जी, anyone? Modules can be tested separately. टेस्टिंग तो बाद में आएगी ना, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? So let's say you have a team of, let's say, 3 members. ठीक है, you have a team of 3 members. तो आपने वर्क एलोकेशन करनी है, right? So how would you organize that? Right? So I hope this would give you the hint which I want to, or the direction in which I want you to think. So तलाल ने बात ही की है, testing easy to explain and work can be sorted into order depending on importance, right? So simple thing is, if you have something to develop, task allocation, yes Mara, this is something which I was actually referring to. So if you have this sort of an hierarchy, and if you have some developers with you, you can assign each class independently to your developers, and they can develop independently. And then you have like one person who could actually integrate everything together, जिसके पास ये सारी की सारी हायरार्की पड़ी होगी, ठीक है, जिसके पास ये सारे का सारा स्ट्रक्चर पड़ा होगा, जिसमें इनहेरिटेंस भी आ जाती है, बेशुमार और चीज़ें भी आ जाती है. इट्स नॉट जस्ट इनहेरिटेंस, आई मीन देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स. तो आप एक बंदे को कहते हैं, अच्छा जी आपने सिर्फ सैमसंग के, लेट्स से सैमसंग के इस स्पेसिफिक मॉडल के ऊपर आपने फोकस करना है, और आपने इसके लिए ये हम करना चाहते हैं, जस्ट डू दिस, ठीक है. दूसरे को आप कुछ और कह देते हैं, तीसरे को कुछ और कह देते हैं, तो आप उनको स्पेसिफिक टास्क एलोकेशंस कर सकते हैं. देयर इज वन पर्सन हु इज सिटिंग देयर हु इज एक्चुअली गेटिंग दैट इनपुट फ्रॉम वेरियस टीम मेंबर्स एंड इंटीग्रेटिंग देम टुगेदर, ठीक है. सो दैट वुड मेक थिंग्स क्वाइट इजी, ठीक है, वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर, एंड दैट वुड आल्सो कीप सीक्रेसी, आई वुड से. सबके पास कंप्लीट कोड नहीं होगा, तो एवरीबडी वुड हैव इट्स ओन बिट. तो अगर वो नौकरी छोड़ के चला भी जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास ही साथ लेके जाएगा, कि जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है, अनलेस कि वो वहाँ से किसी तरह से निकाल के ले जाए, उसको एक्सेस नहीं होगी, ठीक है. तो इस तरह से यू कैन ऑल्सो हैव दैट सॉर्ट ऑफ एन अरेंजमेंट जहाँ पे बचत हो सकती है. Okay, I guess this is enough for today. I'll just put myself this, and then we'll continue our discussion next time on some further topics.